Welcome to IB Today podcast. Let's talk. This is your host Mohammad Afan and today we're doing a special episode regarding mutual funds और उसके लिए हमने एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को बुलाया है मिस्टर मुस्तफ़ा पाशा. मिस्टर मुस्तफ़ा पाशा, जो लोग आपको नहीं जानते उनको थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं कि हु इज मुस्तफ़ा पाशा. थैंक यू आफान. तो मेरा इंट्रोडक्शन अब कहाँ से स्टार्ट करें. तो very briefly, I was born in Hong Kong back in 1984, so I'm a bit older than you are. मेरी फैमिली जो थी हम लोग कराची में हुए थे 1990 में आफ्टर बीसीसीआई जब बंद हुआ था. तो माय फैमिली देयर आल्सो अ लॉट ऑफ देम वर बैंकर्स. फिर मैंने अपनी स्कूलिंग कराची में ही करी थी. ए लेवल्स यहाँ से मैंने 2002 में करके गया था. फिर मैं यूनिवर्सिटी के लिए कनाडा गया था वेयर आई कंप्लीटेड अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स. फिर आई केम बैक इन अराउंड 2006-7 एंड वहाँ से आई स्टार्टेड वर्किंग एसेट मैनेजमेंट के अंदर ब्रोकरेज साइट पे. And now, mashallah, say almost 15 years later, here I am. Right, it's quite interesting. So you worked in asset management for a period of time, for a long period of time. Yeah. तो वो थोड़ा सा अपना background बता दे, where and how did you end up in Lakson right now? So when I started, मैं आया था वापस कराची जब पहुंचा था. तो उस टाइम पे asset management was the sort of new kid on the block. उस टाइम पे mutual funds, investment. It wasn't as popular as it is today. So it was a very growing sort of industry. And of course, जो मेरी degree थी, it was economics. That was my major. मैंने minor history and political science में किया था. But economics was my focus. So it seemed like a good fit. कि जी, I'll get the opportunity to do research, to study the economy. And that's actually जो मैंने start भी लिया था. That's how I started. मैंने macro economy पे research करना शुरू करी थी and sector research जहाँ मैं banks पे focus करता था. तो that was what I started with. मैंने research करी asset management के अंदर भी मैंने economy and banks के ऊपर research करी थी. फिर मैंने sell side brokerage houses के अंदर भी मैंने research करी थी. And then after a few years of doing research, I got the opportunity to start managing funds and money and portfolios for clients. So मेरा जो पहला experience था, it was actually with the money market fund that I was given the opportunity to manage. Money market funds are very low risk, short term sort of instruments. So I think जो उस time पे मेरे bosses या supervisors थे, उन्होंने ये कहा था this is probably a good way to test him out. Because technical knowledge a lot of people do have. Main thing I think portfolio management में जो आपको देखनी चाहिए with anybody is what kind of temperament they have. So whenever you start, and मुझे याद है उस टाइम पे तो छोटे से फंड होते थे. But I remember even जब हम लोग even आप छोटे से define कर लेगा, what do you mean by छोटा? Like for me something small would be 1 crore, but how small would you think? So उस टाइम पे for example the money market fund that I was managing first up वो काफी छोटा सा था. It was maybe a few hundred million rupees. 500-600 million रुपए का होगा. तो उस टाइम पे जब आप पहली जो आप डीलें कर रहे होते हैं 50 मिलियन 100 मिलियन, तो आपको ऐसा लगता है कि बस आसमान टूटने वाला है आपके ऊपर. तो वो जो टेम्परामेंट होता है that comes with experience and obviously how your confidence in your own skill set, आपकी जो knowledge है, education है, and the sort of work that you put in. तो टेम्परामेंट बड़ा ज़रूरी है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में. तो आई started managing a money market fund. फिर इवेंचुअली मेरा पोर्टफोलियो एक्सपैंड हुआ. बाकी फिक्स्ड इनकम फंड्स मैंने देखना शुरू किए, एडवाइजरी के पोर्टफोलियोज देखना शुरू किए. देन आई वाज गिवन रिस्पांसिबिलिटी ओवरऑल ऑफ द फिक्स्ड इनकम साइड. एंड देन I moved to Lakson, where again I was looking at fixed income. And then because I had an interest, of course, and I had the background, so I started looking into equity fund management as well. और फिर equities के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया, उनकी management strategy etc करना शुरू करी. And then eventually I was given the portfolio where I was looking after the entire sort of book जो हमारी कंपनी चलाती है, म्यूचुअल फंड्स की, एडवाइजरी की. And then in my current role, I carry the title of Chief Investment Officer. A Chief Investment Officer का जो primary role होता है वो ये होता है that they lead the investment and research effort जो होती है. तो a team of fund managers, research analysts, traders, and his job is essentially to come up with investment strategy, asset allocation, funds को कहाँ position होना चाहिए, and basically जो team जो ideas लेके आ रही है उनको filter करना, उनको refine करना,
and then to take it to the relevant committees and have it approved and then executed. Right. So that's the primary job of a chief investment officer. My portfolio is slightly more expansive. So other than just purely looking at the investment side, I'm also responsible for the overall sort of division of asset management and advisory जो हम लोग अभी manage करते हैं. तो उसके अंदर whether that is sales and business development, whether that is operational oversight over other departments जो operations, finance, transfer agency, investor relations, जो भी what goes into it. So my portfolio encompasses all of these things now, rather than just investments. So the sort of responsibility of the division's growth and profitability and उसकी performance वो अब मेरे जिम्मे पड़ती है along with my team. Right. तो हमने काफी बात कर ली पोर्टफोलियो के बारे में. Let's talk about broader sense कि how does you run a mutual fund? How does a mutual fund operate? ये होता किस तरह है? How does it work? Those people who don't know, किसी को कोई idea नहीं है mutual fund के बारे में. So mutual fund जो है firstly जो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं इनको जो फॉर्म किया जाता है ये अंडर ट्रस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट किए जाते हैं. एंड जो म्यूचुअल फंड्स की जो मैनेजमेंट होती है वो लाइसेंस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को दी जाती है. तो एज एनी कंपनी यू फर्स्ट हैव टू ऑब्टेन द एसेट मैनेजमेंट का लाइसेंस. उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं. यू हैव टू गिव अ होल बिजनेस प्लान, यू हैव टू शो अ टीम, and then you get the license to manage mutual funds. So an asset management company will, once they are licensed and up and running, they will launch a mutual fund under this trust structure. Now a mutual fund hota kya hai? At its basic form, it is essentially a pool of money जो आप various investors से जमा करते हैं and then you invest it. Right? So you have different kinds of mutual funds. So like I mentioned at the beginning, I started off in a money market fund. So money market fund is one category of investments. उसके अंदर जो portfolio बनता है, it is essentially short term, low risk and liquid. These are the defining characteristics of it. उसके अंदर permissible investments, आपकी ट्रेजरी बिल्स होती हैं, बैंक डिपॉजिट्स होती हैं, प्लेसमेंट्स होती हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं. तो यू वुड बी इन्वेस्टिंग दैट पूल ऑफ मनी इनटू देयर. यू हैव equity funds जो स्टॉक मार्केट के फंड हैं. तो अगेन यू आर गैदरिंग मनी, आप पैसे जमा करते हैं, यू क्रिएट दैट पूल और फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. यू पिक योर सेक्टर्स, यू पिक योर कंपनीज, यू पिक योर एक्सपोजर लेवल्स एंड देन यू मैनेज इट. यू माइट हैव ए मोर फंडामेंटल ओरिएंटेड पोर्टफोलियो. You could have a tactical portfolio. That depends more on the fund manager कि वो कितनी trading, कितनी churn करता है, कितना अपने portfolio में active है. But at its heart, the mutual fund is a pool of money that is collected by a number of investors and it is managed by an asset manager. ठीक है. हम बात कर सकते हैं, you run Lakson right now. Lakson. So basically, let's talk about your investment strategy. मतलब how do you position yourself, and considering you are a CFA chartered holder as well. And let's talk about how educationally हमें क्या पढ़ते हैं और इंडस्ट्री में या मार्केट में हम किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, and how does it differentiate on that particular point from your company perspective? Sure. So in terms of how do we develop strategy, and again every company will be different, मगर कुछ basic parameters होते हैं under which you operate. Normally what we try to do is we first employ जिसको हम कहते हैं top down approach. ठीक है ना. तो हम लोग अपनी टीम्स के साथ जब बैठते हैं, which would include fund managers, analysts, etc. And we basically look at the macro landscape. ठीक है ना कि जी पाकिस्तान की फिस्कल डेफिसिट्स, उसकी करंट अकाउंट डेफिसिट्स, उसकी इन्फ्लेशन, मार्केट में लिक्विडिटी, व्हाट्स द ग्रोथ लुकिंग लाइक, व्हाट सॉर्ट ऑफ करेंसी के ऊपर कितना प्रेशर है या नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स की क्या मूवमेंट है. सो यू बेसिकली कम अप विद ए सॉर्ट ऑफ determination के what sort of environment are we in? Are we in a growth environment? Are we in a contraction environment? Once आप macro side पे अपना एक बना लेते हैं view, then you start to go down into the sectors. कि ठीक है जी, if there is an environment जहाँ पे for example interest rates are rising rapidly, currency under pressure है, depreciation रुपये की अगर हो रही है, growth जो है slow down हो रही है, तो what sectors would thrive or be defensively positioned in that sort of scenario?
So then you would be like, okay, fine, business models which don't rely on cyclical demand, on consumer demand, जो discretionary जो होती है ठीक है जब लोग spending करते हैं, you want to be focused on sectors which are involved in items जो necessities हैं. ठीक Right? है So, for example, you would say, okay, I want to be in fertilizers, right? I would want to be in banks, maybe I would want to be in exploration and production, oil and gas की जो sector है. तो you're basically looking at it कि ठीक है, that is rising interest rates, so you don't want companies with a lot of leverage. Currency पे depreciation है, तो you pick companies that have dollar denominated revenues, right? And because growth will be low and demand will be low, so you want companies that have pricing power और उनकी demand relatively inelastic है. So that's then आप sectors अपने identify कर लिए. Then जो analysts होते हैं उनका main काम, because वो sector specific analyst होते हैं, तो fertilizer का analyst होगा, textile का analyst होगा, banking का analyst होगा. Then their job is, once you get this macro and sector view, is कि अब वो अपने sector में से they need to identify what are the best opportunities company wise, right? So that's basically how you sort of create an equity strategy. Fixed income की भी एक strategy होती है, that is obviously more to do with interest rates and what sort of credit risk you're taking, but the process essentially would be the same that you would follow. Right, so that's quite interesting on that particular point. So you talked a lot about किस तरह select sector को choose करते हैं. Yeah. We have seen the recent rise in stock exchange. What do you take on that? How does that work on a relative strategy for you or for your firm in general? So I think one of the things that was evident, जो पिछले हम 1 साल 2 साल से हम देख रहे थे, is that के market की जो valuations जो हम कहते हैं, and valuations को हम 2-3 metrics होते हैं which you can use to define कि जी market का जो market cap है वो absolute terms में कितना है, और maybe as a percentage of GDP कितना है, market का जो price to earnings का जो multiple है वो क्या है, market की dividend yield अभी क्या है, उसकी price to book क्या है, ये जो ratios जो आप study कर रहे हैं ये अपने historical level से कितने ऊपर कितने नीचे हैं, ये जो पाकिस्तान specific जो data है वो अपने region से जो historical discount या premium होता है उससे कितना differentiate कर रहा है, right? And then you sort of make the assessment कि is the market cheap based on that historical level and regional comparison, or is it expensive? तो I think पाकिस्तान में पिछले 1.5-2 साल से यही नजर आ रहा था कि मार्केट की जो प्राइसेस थी और इंडेक्स का जो लेवल था वो फ्लैट था. You would get spikes in it, right? जैसे कोविड में हमने देखा कि मार्केट क्रैश हुई फिर रिकवर हुई, बट इट वाज रेंज बाउंड इन दैट सॉर्ट ऑफ अराउंड 40,000 लेवल के ऊपर. मगर ओवर द लास्ट 3-4-5 इयर्स जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स थी वो ग्रो करे जा रही है, राइट? कि तो इफ यू लुक एट द जो हैवी वेट सेक्टर्स हैं KSC 100 के अंदर, which are primarily 3 or 4 banks, E&Ps, fertilizers, cement. You looked at their earnings, and over the last 4 or 5 years, their earnings had been continuously growing. Right? But have you seen investors? You have interacted with a lot of investors. Have you seen those investors? कि rather than investing in mutual fund, मतलब एक बंदा जो mutual fund में invest करने का सोच रहा है, how do you pitch them differently? के मतलब how do you pitch them mutual fund? अगर वो सोच रहा है यार मैं गोल्ड पे लगाऊं, डॉलर्स खरीद के रख लूं, मतलब how do you pitch them differently? Because डॉलर्स अगर मैंने रखे हुए 2017 से, which I have particularly personally. But when अभी तक, and I've seen I bought it at I think 2018 तो 140 पे था. I'm having a good return from all the money that I managed. But from a broader perspective, आप investor को किस तरह pitch कर रहे हैं कि you invest in mutual fund rather than go forward with your dollar or gold strategy. So there's two things. एक तो ये कि even today पाकिस्तान के अंदर जो mutual fund या asset management का जो बड़े clients हैं, they are not retail investors. True. Right? अभी भी the majority of money जो manage होता है, that comes from institutions, it comes from retirement funds, it comes from family offices, it comes from H&Ws, जो high net worth individuals. And retail is definitely, ऐसा नहीं कि retail का पैसा नहीं है, मगर it is a smaller segment and it is growing also, ऐसी बात भी नहीं है. But तो इसके अंदर जो mutual fund की जो attraction होती है for different classes of investors, it will be different depending on who you are. अगर आप एक corporate हैं और आप डिसाइड कर रहे हैं कि मैं खुद इन्वेस्टमेंट करूं या मैं म्यूचुअल फंड के पास जाऊं,
तो आपके लिए दो कंसिडरेशंस हैं. वन इज दैट कि मैं जो खुद इन्वेस्टमेंट करूंगा, डू आई हैव द टीम डेडिकेटेड टू इसको मॉनिटर करने के लिए, राइट, टू मेक श्योर दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑप्टिमाइज्ड. इफ आई डोंट हैव दैट इन हाउस कैपेबिलिटी, तो इट्स बेटर कि मैं उसको आउटसोर्स कर दूं टू एन एसेट मैनेजर, राइट, आइदर थ्रू अ म्यूचुअल फंड और थ्रू अ डेडिकेटेड स्पेशल मैनेज्ड अकाउंट, जिसको हम कहते हैं एसएमएज हम कहते हैं. ठीक है जी. इफ आई एम सेम थिंग एज अ रिटायरमेंट फंड का, अगर मैं ट्रस्टी हूँ, मेरे पास कैपेबिलिटी है. इफ आई एम एन HNW, आई मे थिंक के म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न है फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव इज मच मोर बेनिफिशियल एज अपोज टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट. तो ये भी एक कंसिडरेशंस होती हैं लोगों के लिए कि जी पोस्ट टैक्स रिटर्न म्यूचुअल फंड का बेहतर है कंपेयर टू अगर मैं खुद कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट. ये इंस्टीट्यूशन लेवल पे उनको सोचना है ज़्यादा. इंस्टीट्यूशन पे और HNWs के लिए भी होती है. अच्छा, क्योंकि बिकॉज आम लोग तो, क्योंकि आप एक म्यूचुअल फंड प्रेजेंट करते हैं, मैं एक रियल एस्टेट लेवल पे कह रहा हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, और वो उनका तो टैक्स का सीन ही नहीं है ना, तो दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव. तो मतलब हाउ डू यू पिच दैट कि तो सोच ही नहीं रहे टैक्स के बारे में. So I think वो यही है. One thing to understand obviously is that mutual funds are heavily or highly regulated है, right? तो इसके अंदर documentation, transparency, AML, KYC की हमारी strong वो होती हैं. तो हम जब भी किसी से पैसा लेते हैं, तो we need to understand कि suppose हमें कोई 5 लाख दे रहा है, 10 लाख दे रहा है, 10 करोड़ दे रहा है, 1 अरब रुपए दे रहा है, जो भी दे रहा है अमाउंट, उसके पैसे source of wealth क्या है, is there a reasonable source of income for it, उसके tax या wealth statements, उसके bank statements. Oftentimes you will need this kind of documentation. Definitely. Recently SECP का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसको वो सहूलत सरमायाकारी कहते हैं या सहल अकाउंट्स कहते हैं. उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि फॉर स्मॉलर इन्वेस्टर्स, जो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके टिकट साइजेस आर ऑन द स्मॉलर एंड, उसके अंदर अ लॉट ऑफ द KYC की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की, व्हिच दे हैव टू फुलफिल एज पर द रेगुलेशन, वो इन्होंने ईज कर दी है, राइट. तो जैसे सहल अकाउंट्स होते हैं व्हिच यू कैन ओपन, और उनकी एक लिमिट होती है 1 लाख 2-3 लाख रुपए की, एक उनकी एनुअल एक लिमिट होती है कि उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते अंडर दिस कैटेगरी. तो उसके अंदर सिंपली आपको CNIC देना होता है, देयर इज नो अदर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट. इफ यू गो अबव द लिमिट, फिर वो अकाउंट की कैटेगरी चेंज हो जाती है, फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है, राइट. तो म्यूचुअल फंड्स आर हाईली रेगुलेटेड. तो आई थिंक एक्चुअली वो स्टेट बैंक से उन्होंने लिया था जब आसान अकाउंट बनाया था, एंड देन स्टेट बैंक का क्या आसान अकाउंट सिर्फ CNIC चाहिए, एंड देन अब SECP ने took that. इट्स अ वेरी गुड कांसेप्ट. आई मीन अगर आपने लोगों को अट्रैक्ट करना है टुवर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपने पाकिस्तान में सेविंग्स मोबिलाइज करनी है जो एक्चुअली प्रोडक्टिव यूसेस के लिए चैनल हो सकती हैं, तो यू नीड टू गिव पीपल एक्सेस, एंड यू कांट एक्सपेक्ट कि डे वन पे जब आपने आधी आपकी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है, लोग टैक्स नहीं देते या टैक्स फाइल नहीं करते. टैक्स तो हर बंदा इन वन वे और अदर देता है, मगर टैक्स फाइल नहीं करते, डॉक्यूमेंट नहीं है वेल्थ. तो हाउ डू यू गेट पीपल टू कम टुवर्ड्स द डॉक्यूमेंटेड रेगुलेटेड सेक्टर? तो यू नीड टू क्रिएट दीज इंसेंटिव्स कि आसान बनाए. तो ये अच्छे इनिशिएटिव्स हैं. इनफैक्ट द इनिशिएटिव्स दैट वी हैव सीन फ्रॉम अ लॉट ऑफ एसेट मैनेजर्स एंड इवन जो ब्रोकरेज हाउसेस इन द लास्ट few years, and which I think is going to be one of the defining sort of things for Pakistan की capital market in the next 3 to 5 years, is के पाकिस्तान में जो स्मार्टफोन यूसेज है और जो एक्सेस अब है लोगों के पास टू ओपन ब्रोकरेज, टू ओपन म्यूचुअल फंड्स, टू गेट एक्सेस टू इक्विटीज एंड फंड्स एंड ऑल ऑफ दिस on your phone, this is a game changer in my opinion, right? Right, so we talked about different topics, but let's talk about global economy. Pakistan की economy पे, and how does the global economy or geopolitical conditions जो Israel और Hamas का conflict है, we are seeing that fold right now. So what's your take on Pakistan's general economy, and हमें किस तरह impact आएगा, and how should we consider that? Right, तो ये जो geopolitical situation we've seen, पहले हमने रशिया यूक्रेन वॉर देखी थी, and now we've seen मिडल ईस्ट के अंदर जो गाजा के अंदर जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हम देख रहे हैं. नाउ इसका जो मार्केट या इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो इमीडिएट होता है इन बोथ केसेस जो हमने देखा था, व्हेन द रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्टेड एंड व्हेन अक्टूबर 7 का जो इंसिडेंट हुआ था, तो उसके अंदर इमीडिएट इम्पैक्ट ये होता है कि कमोडिटी प्राइसेस स्पाइक करती हैं, राइट? बिकॉज if you look at the regions and the countries involved in both of these sort of conflicts, is that they are commodity producing nations, right? Russia, one of the biggest producers of oil and Ukraine, one of the biggest producers of wheat, right? Similarly, जब इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जब ये कॉन्फ्लिक्ट हो रही है,
तो उसके अंदर जो एस्केलेशन का रिस्क है बिकॉज इसराइल हैज इन्वेडेड या वो उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन जो की हुई है, does that give the possibility कि other countries may get involved to come to the defense of Palestinians, right? वो एक fear जो market players हैं वो price in करना शुरू कर देते हैं। तो उसके अंदर ये है कि जी ये सब oil producing nations हैं, सऊदी भी वही हैं, ईरान भी वही हैं, कतर भी वही हैं, तो you know all that whole energy chain is in the neighborhood। तो fear यही होता है कि commodity prices ऊपर चली जाती हैं। पाकिस्तान is a commodity importer, right? चाहे वो अब तो फूड स्टफ्स की हमने देखा है कि थोड़ी सी प्रोडक्शन बेहतर हो गई तो इंपोर्ट्स उनकी कम हो गई, मगर वीट भी हम इंपोर्ट कर रहे थे, शुगर भी हम इंपोर्ट कर रहे थे, कॉटन भी हम इंपोर्ट कर रहे थे, टी भी हम इंपोर्ट कर रहे थे, एडिबल ऑयल भी हम इंपोर्ट करते थे या हैं, एंड ऑफ कोर्स क्रूड एंड रिफाइंड प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं, एलएनजी भी इंपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए a commodity price spike is a big sort of weak spot for us, right? तो अगर ये geopolitical situations escalate हों और contain ना हों तो उसके अंदर potentially पाकिस्तान के लिए negativity यही है कि आपकी commodity prices ऊपर जाती हैं, उससे क्या होगा कि आपके imports पे pressure आता है, उससे क्या होगा आपके deficits बढ़ेंगे, फिर आपकी currency के ऊपर pressure आएगा, फिर inflation ऊपर जाएगी, फिर interest rates ऊपर जाएंगे, फिर growth slow होगी, तो वो पूरी एक फिर cycle चलना शुरू हो जाती है, right? तो इवन जब अभी अक्टूबर में जब स्टार्ट हुआ था लेटेस्ट जो क्राइसिस है, तो उसके अंदर इनिशियली हमने देखा कि ऑयल स्पाइक हुआ था टुवर्ड्स ऑलमोस्ट $100। फिर उसके अंदर क्या हुआ कि आई थिंक जब ये शायद लोगों को लगने लगा कि ये शायद कंटेजन नहीं हो रही है इस कॉन्फ्लिक्ट की, फिर जो इकोनॉमिक डेटा आना शुरू हुआ चाइना से, यूएस से, इन्वेंट्री लेवल्स का एक्सेट्रा, तो उसके अंदर यही नजर आया कि जी ऑयल की डिमांड इज स्टिल लोअर, इन्वेंट्रीज बिल्डअप हो रही हैं, तो ऑयल एकदम से वापस नीचे आ गया बैक टू $80 अ बैरल। तो वो पाकिस्तान के लिए एक वी गॉट लकी, राइट, कि बिकॉज अगर ये ऑयल जो 100 के करीब था, ये अगर 120 130 हो जाता तो जो मैंने जो चेन बताई थी ना कि इंपोर्ट, एक्सटर्नल अकाउंट, करेंसी, इन्फ्लेशन, वो सारी ट्रिगर हो जाती है। तो फॉर नाउ पाकिस्तान इज ओके इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी प्राइसेस, बट if this thing does escalate and commodity prices do start reacting, then it could become a problem for Pakistan. The other way जो ये अफेक्ट करता है पाकिस्तान को is that हमें पता है कि पाकिस्तान का जो करेंसी क्राइसिस है वो इसलिए है कि बिकॉज बहुत बड़े कंसर्न्स थे ओवर पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व्स एंड डेट रीपेमेंट की एबिलिटी या कैपेसिटी, राइट? तो डिफॉल्ट पिछले एक साल से हम सुन रहे थे कि हो जाएगा। फिर आपने जब IMF जुलाई में साइन किया था तो वो थोड़ा सा सेंटिमेंट बेहतर हो गया था, मगर फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज कि पाकिस्तान बस अब डिफॉल्ट किया। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट, स्पेशली गोइंग फॉरवर्ड, राइट? हिस्टोरिकली हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन इन्फ्लोज थे वो पहले हिस्टोरिकली अमेरिका ने किए थे, राइट? और फिर उसके बाद चाइना ने किए थे, मगर गोइंग फॉरवर्ड द प्लान वाज दैट यू वुड टैप दीज सोर्सेज ऑफ इंटरेस्ट एंड लिक्विडिटी फ्रॉम द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। तो अगर यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाए और वो एस्केलेट हो जाए फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, तो इवन फॉर दोज कंट्रीज जो प्रायोरिटी लिस्ट है कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, FDI करना है, प्रोजेक्ट लगाने हैं दूसरे मुल्कों में, वो प्रायोरिटी लिस्ट पे नीचे आ जाएगी चीज इफ दे आर फाइटिंग अ वॉर फॉर एग्जांपल। तो ये एक पाकिस्तान के लिए और रिस्क है कि अगर ये चीज एस्केलेट हो गई और इन कंट्रीज का ध्यान ऑब्वियसली इज ऑन दैट कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ टू स्टॉप इट, या उनकी जो भी स्ट्रेटजी है, तो फिर maybe they will not prioritize investments in Pakistan, which Pakistan is counting on. That's quite interesting. So, मतलब how do you अच्छा आपने बात कर ली ज़ाहिर हमास और किया, and that's something. Now you represent a group which has been under scrutiny, जिनकी उनकी different entities है, मतलब particularly McDonald के बारे में बात करते हैं, Lakson Group does own McDonald's in Pakistan. मतलब what do you take on that, मतलब the calls of boycott? So I think आपका पर्सनल ओपिनियन है, खैर अगर right, आपका हाँ of course मेरा पर्सनली ओपिनियन होगा because yes, McDonald's is part of the Lakson Group, but it's obviously a separate company from what I represent. Look, in terms of a boycott, what I would say is that I think they're important tools of social change. Consumer behavior का impact on economic policy, on foreign policy, you can't
underestimated, right? If you are able to mobilize enough people behind a certain idea, behind a certain thought process, कि यार ये चीज जो है गलत हो रही है, and as individuals, as consumers, that is the only power we have, कि to tell the people in power कि we disagree, हम और या तो आप violent resistance की तरफ जाएं. अगर आप violent resistance नहीं कर रहे, तो as civilians, the only options you have left is to make economic decisions. So boycotts, I think, are important, and they can be agents of change, right? To people to change policy or tilt policy, right? So, but I think it is also important to differentiate between boycott, आप किसको कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, and what it sort of represents, right? तो मेरे हिसाब से for companies that are operating in Pakistan that may represent foreign brands, I think you should have a thorough understanding of कि ये company कितनी काम कर रही है, उसकी ओनरशिप किसके पास है, उसके एम्प्लॉइज कहाँ हैं, उसका रेवेन्यू कहाँ जा रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ जा रही है, राइट? अगर आप फ्रेंचाइज मॉडल देखें जो जनरली, बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट मैकडॉनल्ड्स, द मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज रिटेन्ड विद इन पाकिस्तान. इट इज रन बाय पाकिस्तानीज, इट इज ओन्ड बाय पाकिस्तानीज, एंड इट एम्प्लॉयज पाकिस्तानीज. ठीक है ना? मैकडॉनल्ड्स ग्लोबली, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, आई डोंट थिंक दे आर endorsing the actions of individual McDonald's जो अपनी कंट्री में करते हैं. ये फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल दें कि अगर मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, अगर जैसे हमारी अफवाज भी लड़ती हैं, राइट, ट्राइबल एरियाज में, बॉर्डर्स पे, इफ सपोज देयर वाज ए क्लैश जहाँ शहीद हो जाए, एंड सपोज a company like McDonald's या any other company पाकिस्तान में, they announce कि जी हम शोदा की फैमिलीज के लिए इमदाद देंगे या whatever, they make some gesture, तो we will perceive it as Pakistanis positively, but perhaps जो दूसरे साइड पे है, वो कहेगा कि यार आप ये कंपनी क्यों इसके अंदर डायरेक्ट स्टांस ले रही है, राइट? सो I think it's a similar kind of situation, right? So yes, there is a boycott of globally. हम social media पे especially बहुत देखते हैं कि ये चीज़ें लोग अपना express कर रहे हैं, frustration and anger, and but I think कि you know, just be intelligent about it, कि यार आप किसको hurt कर रहे हैं by doing the boycott, and how effective are you? वरना मेरे हिसाब से as a tool for social change, people should do it. अगर वो समझते हैं कि चीज़ गलत हो रही है. Right. Thank you, Mr. Mustafa, coming in for the show, and I really love the conversation, and I hope you could have continued. But I feel the audience would, love the conversation in general, and we touched upon many topics. So thank you for coming in, and thank you for all those who are watching. I hope you love the show, and see you in the next. Allah Hafiz.